Om Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone world over, wherever you are. It's a green morning, green afternoon, green evening. I got this terminology from a gentleman from Agra. I used to say good morning, good afternoon, good evening during the Zoom sessions during pandemic. And one day in the morning, he told me, Sushil Gupta ji, he's the honorable principal of one of the prestigious schools over there. He says, when we all talk about ecology, environment, global warming, protection, why not we should call it green morning, green afternoon, and green evening? So, ladies and gentlemen, always give credits to others. That should be the first part of tourism and first projection of the tourism we all have to understand. So, I dedicate and I convey my gratitudes and thanks to Dr. Sushil Gupta ji, who had been very kind to give me from Agra all the way what exactly is green morning, green afternoon, and green evening. So, world over, wherever you are, yesterday in the NRI's program, we made an announcement, and today we are taking that particular technology forward. Yesterday, we discussed that from 12th of June, that is from today, we will be dedicating every Monday to tourism, Tuesday to hospitality, Wednesday to aviation. Then again on Thursday, we'll come back to tourism, Friday to hospitality, and as far as Saturday is concerned, either it would be aviation or some other dignitary who keeps coming from time to time. But Sunday, you all three programs will remain intact. Early in the morning, we'll be going to Woodbury University, Burbank, California. विद्या से अध्यात्म विद्या की ओर शाम को 7 बजे, that's every Sunday, we would be having wellness, global wellness through Ayurveda, because we want you should be physically, mentally, spiritually, environmentally, economically, globally. Everybody should have the wellness. And then, of course, Sunday evening at 8 p.m., it would be dedicated to our non-resident Indians on different topics. You'll keep having now some more people also joining us from the coming Sunday, and that's the way we are moving on. Today, let's focus on tourism. And when we talk about tourism, travel and tourism, first you travel, then you enjoy tourism, and you take on various tourism activities. You can see somebody right over here with the backpack, right in front of the mountains, enjoying over there. Down below, there's an institution and skills are being imparted. And somebody is trying to get adventure tourism, ecotourism, nature tourism, wildlife tourism, responsible tourism, whatever you want to give it. Any term you can give, whatever suits you. And our brothers and sisters who join us from the world over, and wonderful people who join us from the world over. Some people, they are regular, like Sakshi Chauhan from Uttarakhand, she is always regular. Vidhi Jaiswal ma'am from Haryana, she is always regular. And then besides that, Julie ma'am from this northeast part of India, she's also regular. And Mohit Chaudhary from Pathankot, he's also regular. And there are a couple of other people. Mayank ji is also joining. Hearty welcome, and it's a pleasure to have you. Now, today's topic is very interesting. I will not be covering the total topic today itself, because something I'll have today and something I'll have with you on Thursday. Because we want to go step by step so that you all enjoy tourism, education. First of all, education itself is, undergoing somersault and lots of changes post-pandemic time. Hybrid model, flip learning, inside classroom learning, outside classroom learning, under the tree learning, technology-based learning, digital-based learning, digital inspirational lab-based learning. Everybody's talking about let's make education and skills reinvented, and of course, making it relevant. That is something very important. Then we want to talk about technology. And then we want to talk about future trends. So tourism, education, technology, and future trends, everything we will try and package it. Whatever we can take on today, we will take on. Rest, we will be with you on Thursday again.
When we talk about tourism, it's a very fascinating subject. And anybody who is a vocational teacher and who is associated with tourism, please do not please do not teach anything from books. Please do not teach anything from the textbooks. Please do not follow the old written things as it is, because I would like to accept myself. The PhD which was given to me in mid 80s is no more relevant. It has become obsolete and obsolescent, and I got to move on. Things are moving very fast, and anybody who is with the present moment and living in present and thinking ahead would only be in a position to survive the best possible way. और दूसरा, अपने मोबाइल एप्स का बेस्ट पॉसिबल यूज कीजिए, because your mobile phone is something very, very important. I would rather say, if somebody gives me a better bandwidth at a place where there's no internet connection, there's no Wi-Fi, आप मुझे एक वक्त का भोजन मत दीजिए, लेकिन मुझे वाईफाई कनेक्शन दे दीजिए. That is something very important which I would request each one of you. So when we are talking about tourism, it's something practical. There's nothing theoretical. It's all which is happening in the form of ground realities, and it depends on how do you plan, how do you package, how do you deliver, how do you monitor, who are the people who are accompanying. And of course, if you remember, I hold my tourist guides in the great, great respect. They're wonderful people. They do a lot for us, and they got to be appreciated and recognized, क्योंकि हमको repeat tourism चाहिए, high spending tourism चाहिए, mass tourism नहीं चाहिए, selective tourism चाहिए. And what kind of a tourism we need in this country, we will talk about that. Tourism is one subject, because I've been associated for last 4 decades. I can talk about this so much practical, and I can give you so much. Now, mobile key, when we are talking about, and technology when we are talking about, everybody is moving in the direction that all IoT devices which we have got, Internet of Things devices, they all play a very important role for us in travel and tourism. It is changing everything. You remember that earlier travel agent आपका पासपोर्ट भी बनवाता था, आपकी टिकट भी बनवाता था, आपकी इंश्योरेंस भी करवाता था, आपको फॉरेन एक्सचेंज भी दिलवाता था, आपका होटल भी टाई अप करवाता था, आपका ओवरसीज ट्रेवल के लिए फैसिलिटेट करके वहां के टूर ऑपरेटर के साथ भी बातचीत करता था. There were a lot of things which were happening. Now the technology has changed everything right from my eyes. When I say, and when I look back in 4 decades, all my friends, all my colleagues, I spent a lot of time with G. Kanjilal ji from the Ministry of Tourism, Government of India. While being on deputation, we were together for almost 5 years. And there was a lot to discuss, and there was a lot to feel, and emotions were altogether different. What exactly is happening? Now, when we are adopting technology, it is so flexible. Now, new kind of a tour package. You have got by touch of button all the facilities. It depends on you how basically you make optimum use of technology and you take an advantage. Now, how the technology is changing travel and tourism, we all got to understand. Now, in the broader term, when you talk about, it is used to basically describe the application of the information technology, e-commerce, and similar kind of a technology solutions which are in the field of travel, tourism, hospitality, aviation, and education and health sector, and a couple of other areas what we have got. At the same time, in the hotel industry, technology is seeping in so fast, and we are working in particular direction. So thereby, all the staff members, irrespective you're in tourism, you're in hospitality, you're in airlines, or you're in other sectors, wherever you are world over, try and catch up. Because nighttime when you sleep, the world is altogether different. In the morning when you get up, you find there are new apps, there are new edtech platforms, there are new solutions. Somebody has brought all together something new for you.
थोड़े दिन पहले मैं बातचीत कर रहा था संजीव जी से, ऑल द वे इन आगरा, व्हेन संजीव सिंह जी वाज टेलिंग मी ड्यूरिंग द पैंडेमिक उन्होंने कोई तकरीबन उनके पूरे लोगों ने मिलकर 50 से 75 कुछ ऐसे जूम सेशंस किए हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लेन किया है डिटेल में. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट होल्ड ऑफ दैट. वंस आई गेट इट आई वुड सर्टनली शेयर विद ऑल ऑफ यू. ट्रैवल टेक्नोलॉजी की जब हम बातचीत करते हैं, एवरीथिंग इज गेटिंग ऑटोमेटेड. ट्रैवल में, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, एविएशन में. बट टुडे बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो जब ट्रैवल एंड टूरिज्म टेक्नोलॉजी की बातचीत करते हैं, it is automating the entire travel process. And uh, there are lots of benefits. I mean, say, how to explain it in a short package? You save time, you reduce cost, and you create seamless travel experiences, and consumers are more happy. Consumers can design, redesign, package, repackage. So many things we can do at their own. So technology can be, and it can be deployed to enhance the customer experience. Kab? Before, then, during, and then after the trip. Before, during, and after the trip, you can experience altogether different. Now there are lots of emerging technologies which you all have to understand and you have to feel, because like there is a voice search, virtual search, augmented reality, virtual reality, metaverse is coming, facial recognition technology is coming, IoT is playing very important role, and this has led to adoption of the smart hotels, smart travel trade people, and everything is changing altogether because customer needs seamless travel, seamless connectivity, and amazing the customer experience without having any kind of queues. कितनी long queues, waitings, ये सब चीजें. And फिर रिसेप्शन के स्टाफ से बात करो, एक्सक्यूज मी, दे से मैम यू आर इन द क्यू, थोड़ा पीछे वेट कीजिए, अभी आपका नंबर नहीं है. What all used to happen? I'm not telling that it was an attitudinal problem, but it was a realistic problem. लोग ज्यादा, स्टाफ कम, तो कई चीजों की दिक्कत आती थी. अब कॉन्टेक्टलेस पेमेंट है. बंदा कहता है कि मैंने हाथ पे घड़ी बांध दी है, यहीं से देखिए, यहीं से सारा कुछ लीजिए, एंड एवरीथिंग लेट्स हैव इट फ्रॉम हियर ओनली, एंड डोंट आस्क मी एनीथिंग, एंड आई विल पे थ्रू वेरियस मोड्स. योर एम इज कि यूपीआई के थ्रू आपके पास पैसे पहुंचने चाहिए, क्विकली पहुंचने चाहिए, कस्टमर हैप्पी होना चाहिए, कैशलेस ट्रांजेक्शंस होनी चाहिए. इन सब चीजों को लेकर जब हम आते हैं, तो customer is also having new experience, and at the same time, the people, those are delivering tourism, those are dealing with the tourism, and most important, those are teaching tourism, and those are so-called learning tourism. Student and teacher relation also has gone as co-learners. अब हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं और वर्चुअल रियलिटी की बातचीत करते हैं, फिर मेटावर्स की भी बातचीत करेंगे. अब वर्चुअल रियलिटी की जब हम बातचीत कर रहे हैं, इट इज emerging, दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज emerging इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स. बट इट्स रोल जब हम टूरिज्म में और ट्रैवल में, इंडस्ट्री की, हमारी अपनी इस इंडस्ट्री में स्पेशली इसका रोल देखते हैं, तो बहुत सिग्निफिकेंट है. मुझे अपना बचपन याद आता है. एक हमारे यहाँ पर आया करता था बाइस्कोप सा लेके, और उसके पास वो एक गोल सा कुछ एक डिब्बा सा होता था, और उसके नीचे 3-4 स्टैंड होते थे. वो उस पे उसको लगाता था और फिर एक ढक्कन को हटाता था, और हम अंदर देखते थे अलग अलग जगहें. ये ताजमहल है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये कलिंगा, अच्छा ये आपका कोणार्क है. फिर हम कुछ और देखते थे. दैट इज द वे वी यूज्ड टू सी. और वहां में कुतुब मीनार और बहुत सारी चीजें दिखाया करते थे. 10 पैसे लगा करते थे, मुझे याद है उस टाइम के अंदर. तो आफ्टर ऑल, ये जो वर्चुअल रियलिटी है, it provides the travelers, tourists, with the ability to experience far away locations, जो बहुत दूर हैं, from the comfort of their own home.
You can literally enter the hotel, see the room, you can see what exactly the facilities and how the things are, and ultimately you can complete the entire booking yourself without disturbing anybody. Now, using virtual reality tours, customers can experience everything. तो जब इन सब चीजों की बातचीत करते हैं और दूसरा 360 डेज का 360 डिग्रीज का टूर आपको मिल जाता है नाउ, इसकी कंपैटिबिलिटी और इसको मेन स्ट्रीम में टूरिज्म के लेकर आना, ये सब चीजें बहुत तेजी से आ रही हैं। अभी आप थोड़े दिन पहले अपने बच्चों के वीडियो गेम्स देखे होंगे। सिमिलर वे, इफ यू ट्राई एंड हैव अ लुक एट इट, हाउ द वर्चुअल रियलिटी इज कमिंग सो फास्ट। अभी अमेजोन से थोड़े दिन पहले मैंने इनका एक इक्विपमेंट मंगवाया और उसको मैंने एक्सपीरियंस किया सारी चीजों को। ओ माय गॉड, द वर्चुअल रियलिटी लुक्स मोर रियल देन द रियलिटी। दैट इज समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। यू कैन एक्सपीरियंस अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर व्हेन यू आर ऑन टू दैट। अब चैटबॉट्स को ले लीजिए, एयरपोर्ट पर, ट्रैवल ट्रेड के लिए, डिफरेंट लोकेशंस पर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पावर्ड चैटबॉट्स हैं, they can be one of the single most sensible travel technology investment we can make, because these chatbots, they can provide us swift answers, no questions in wait, and 24/7, you can, they are approachable, so 24/7 you can make use of. And at the same time, it is something very important, you got to see these chatbots, how basically they are seeping in the travel and tourism, hospitality, and particularly airports आपको बहुत सारे मिलेंगे, and you can just see those chatbots, you can converse with them, you can find out everything again, once again। policies ऐसी होनी चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए, और सब कुछ ऐसे बनना चाहिए कि this all should be done in a very seamless, in a very dignified, and it should get into the system so smoothly that nobody should have any difficulty। ना कस्टमर को प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम जब टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जितने भी लोग पहले सोचते थे अरे क्या करना है स्टाफ को ट्रेनिंग करवा के, बेसिकली यार ये जो मनी की इन्वेस्टमेंट है इसकी जरूरत है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड टुडे, बॉस, द चेयरमैन, द एमडी, the director, the CEO, you all have to be the co-learners with your staff. But at the same time, with the technology coming in a very big way, we want cyber security measures, because इतना डाटा ट्रैवल कर रहा है, एंड डाटा इज द न्यू ऑयल। और डाटा को जब आप यूज कर रहे हैं और ट्रैवल को आप जब मैनेज कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बहुत सारे हमारे चैलेंजेस भी हैं टूरिज्म में। हमारे पास ट्रेन स्टाफ पूरा उस तरीके का नहीं है, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, और हमारे को कुछ एक पॉलिसीज पूरी तरीके से नहीं पता है साइबर सिक्योरिटी टूरिज्म में किस तरीके से क्या और कहां कहां पर अप्लाई होती है, साइबर के लॉज का, इन सब चीजों को भी, फिर हमें आईटी के एक्ट्स वगैरह के बारे में, इन सब चीजों का भी। सो टू मेनी टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर and they've got their own whims and fancies, and we got to have one policy, one system, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देर आर सम टूल्स फॉर द साइबर सिक्योरिटी जो टूरिज्म के अंदर where our concern is there could be a viruses, there could be a hacking, there could be a trojans, there could be a computer viruses, there could be a computer worms, there could be a email related crimes, there could be a denial of services, there should be a cryptology, and so many other things are there. We all got to understand ऑनलाइन जब हम बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन सारा काम करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे हमारे थ्रेट्स हैं, एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, वी गॉट टू सी अबाउट दैट आल्सो। और उन सब के लिए पॉलिसीज हैव टू बी इंटैक्ट। आपकी प्राइवेसी की पॉलिसी, क्लाउड की पॉलिसी, इंफॉर्मेशन की पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, डाटा रिटेंशन की पॉलिसी। आप किसी चीज का कोई किसी से कोई लेने की कोशिश करें, वो कहते हैं अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपनी ईमेल डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, तब उसके बाद आप एक्सेस करते हैं, तो योर डाटा इज ट्रैवलिंग।
it is traveling, and where all it is traveling, you yourself don't know. How many places you have put your mobile phone and your email account and other things. So there should be access control policy. There should be data protection policy. There should be a network policy. There should be an email policy. There should be a website policy. All this is needed in the cyber security. इसके लिए हम आपके साथ एक कार्यक्रम अलग से करेंगे, डिटेल में करेंगे, where I'll get you some experts also. अब जब हम आईओटी की बातचीत करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बातचीत करते हैं, सो इसका जो एप्लीकेशन है ट्रैवल इंडस्ट्री में आईओटी का, ये बहुत ज्यादा है, क्वाइट अ बिट. लोकेशन डाटा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, फैसिलिटेटिंग पार्किंग इंफॉर्मेशन, स्मार्ट एनर्जी सेविंग इंफॉर्मेशन, स्मूथ ट्रैवल की इंफॉर्मेशन, कस्टमाइजेशन की. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग emerging ट्रैवल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जो हमारा आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इन्वॉल्व्स इंटरनेट बेस्ड interconnectivity between everyday devices, allowing them to both send and receive data. We already see examples of its role within the travel and tourism industry, and this will keep increasing because अब आप मोबाइल के बगैर रह नहीं सकते, और मोबाइल की जरूरत भी है. मैं तो चाहता हूं कि आप मोबाइल का ऑप्टिमम यूज करें, क्योंकि गॉड हैज गिवन 24 आवर्स टू एवरीबडी कॉमन ऑन दिस प्लैनेट. कौन कितनी देर रहेगा ये भी उसी को पता है, ऊपर वाले को. बट वन थिंग प्लीज रिमेंबर that you got to make optimum use of your time the best possible way. जो कुछ भी मैनेजमेंट सिखाया जाता है, कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे निकले, दैट इज समथिंग. फॉर इंस्टेंस, अब आईओटी टेक्नोलॉजी अगर इसको हम होटल के रूम के लिए यूज करते हैं, कल उसकी हम डिटेल में बातचीत करेंगे. बट यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग कंडीशन, कंट्रोल्ड, मैनेज्ड, एवरीथिंग. सिमिलर वे एयरपोर्ट्स पर भी है, तो उसकी भी हम आईओटी की डिटेल में बातचीत करेंगे. नाउ ट्रैवल एंड टूरिज्म की जब हम बातचीत कर रहे हैं और इसकी हम डिटेल्स की बातचीत कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट कहां पर हो रहा है टेक्नोलॉजी का, जब हम इस सब चीजों की बातचीत करते हैं. सो एरियाज ऑफ इम्पैक्ट फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रांसपेरेंसी में, सेटलमेंट में, लॉयल्टी में, फ्रॉड में, आइडेंटिटी में, ओवरबुकिंग में, पॉलिसी में, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में. और जो स्मार्ट टूरिज्म है वो एग्जैक्टली क्या है? कम पैसे देकर आप ज्यादा रिटर्न में क्या ले सकते हैं व्हेन यू ट्रैवल टू ए पर्टिकुलर प्लेस. चाहे आपकी टिकट की बुकिंग है, आपकी ट्रैवल की बुकिंग है, आपकी टैक्सी की बुकिंग है, आपकी रेस्टोरेंट में कोई पेमेंट है, आपकी बैंकिंग के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, आप किसी जगह से कहीं कोई पार्किंग कर रहे हैं, आप अपना टूर जो है पैकेज बना रहे हैं, उसी के साथ साथ lots of other facilities which are under smart tourism. अब हम recognition technology, this is also coming in a very big way. अब इसके बारे में काफी बातचीत भी हो रही है कि चाइना ने अफ्रीका के लोगों का, खासकर काफी लोगों का फेस रिकॉग्निशन, जो उन्होंने वहां की इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की लाइट्स हैं, उनके ऊपर जो कैमरास लगे हुए हैं स्ट्रीट्स में, they can recognize your face and they can spot, they can come to know. So recognition की जो technology है, this is also especially very interesting. Within this, you know, there's a list of key technology trends, और इसका जो potential है वो भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है to make everything seamless. और ये जो टेक्नोलॉजी है, it includes your मान लीजिए फिंगरप्रिंट्स है, उनकी रिकॉग्निशन है, आपके फेस की रिकॉग्निशन है, आपकी रेटिना की स्कैनिंग है, या अदर कुछ एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स हैं. इस टेक्नोलॉजी को भी बहुत जल्दी से ये ट्रैवल एंड टूरिज्म में हमारे आ रही है, एंड वी आर टेकिंग इट राइट ओवर देयर. इसी के साथ मैं आज ट्रैवल एंड टूरिज्म का आपके साथ फर्स्ट पार्ट लेता हूं, सेकेंड पार्ट में थर्सडे को लूंगा. बट व्हाट आई विश टू discuss with all of you, travel and tourism is very interesting industry, and most of us, those are into education of travel and tourism, please do not read only textbooks.
please do not explain only from textbooks. Those are in travel and tourism, and those are particularly vocational teachers. Those are into research. You have to study a lot. You have to understand a lot. You have to adopt technology a lot. You have to keep pace time. You got to keep your pace with the time also, because time is moving so fast, things are changing so fast. You just can't imagine how the things are and which way the things are changing. Travel and tourism is very fascinating, very interesting. You cannot learn so many things from books, from academics, what you can experience while you travel on ground. I still recall when I had gone in 1989 for the first time to launch MTA tourism in Kurukshetra University, then in Shimla, Himachal University, then Jodhpur University, then Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore University. Then we had gone to ITM Lucknow. Then we had gone to IITTM Bhubaneswar. And then at the same time, we were setting up, because from the rented building, initially we were in Kutub Hotel in 4 rooms, where from the IITTM started. And then, because coming from a defense background, I spoke to the armed forces, and we got on hire at 12 Nyay Marg, the army building on a rental, basically to help the weaker section of the society, and IITTM shifted over there. And then we had moved to Arunachal building, Barakamba Road, 9th floor. And from there, we moved to Gwalior. Shivaji University, Gwalior gave 20-acre land, and there the institute was set up. And I still recall, next to Sector 16 in Noida, I had been going every day. There's something known as Atta Market. We had taken 5-acre land over there to set up IITTM, but I learned with lots of pain that land was given to some other organization, and IITTM has moved far away in the greater Noida or somewhere. It has gone and they have set up over there. So those are in education. I would request each one of you, do lots of research, do lots of practical tourism, travel yourself. The other day, there was something very interesting. Our patron, Professor Jagdish N. Sheth, all the way from the United States, he made a mention something very interesting. He said, एक tourism के professor अपने बच्चों को बाहर case study के लिए लेकर जाया करते. And when he was taking them to nature, he was taking them to jungle, he was taking them to flora and fauna, he was taking them to rivers and a couple of other places. One fine morning, he decided, and he just got the idea. Idea is everything, ladies and gentlemen. Power of imagination. You remember? We have done the program for you, and that is called mental diet. Like you work on your physical body, you must work on your mental faculty also. And if you want to remain fit till your last day, utilize this faculty the best possible way for the welfare of humanity, society, and community. तो मैं बात पर वापस आता हूं. प्रोफेसर साहब ने एक ऐसी चीज बताई हमें, कहता है कि दैट टूरिज्म प्रोफेसर, he took about 20-25 students आउटडोर के लिए लेकर गए, उनको जंगल में की स्टडी कराया, सब कुछ कराया. वापस आने से पहले ही टोल्ड, अरे यार, हम इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को केस स्टडी के लिए बाहर लेकर जाते हैं, टूरिज्म में घुमाते हैं. Why not to have a channel where everything can be displayed in a practical part of it? And ladies and gentlemen, that was the birth of Discovery Channel. Discovery Channel. With that, I finished today's program. Look forward meeting you tomorrow. कल मैं आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ भुवनेश्वर लेकर चलूंगा, और कल हम पुरी भी देखेंगे, कोणार्क भी देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे, and we will have a healthy stay also, and we'll talk about the complete hospitality industry, what all new is coming over there. With these words, thank you very much for joining us today. Stay fit, stay fine, look after your health, be happy. खुदा ने आपको बहुत नियामत दी हुई है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो मिला है उसका शुक्र मनाइए, और कल सुबह
अगर वो आपको देखने के लिए दोबारा